Amitabh Bachchan sold his NFT at 7 crores. Many people like Indonesian boy sold his NFT and made millions out of it. What is NFT? Why people are buying NFTs? How you can also make your own NFT and you can put it in auction or you can say in the listing. So I would be talking about all the whole things about the NFT so that you will know all the things like how to make your own NFT, what is the NFT, what is the process behind this NFT, like what is happening in this market. So you will get full knowledge about the NFTs. So I am Rishav and in this video we are going to talk about NFTs, right? So what is NFT? Let us try to understand in a basic word what is NFT. सो NFT जो है वो एक नॉन रिफंजेबल टोकन है, इज़ ए नॉन रिफंजेबल टोकन. नाउ व्हाट इज़ नॉन रिफंजेबल टोकन? सिंपल भाषा में समझते हैं हम लोग. अगर आपके पास 10 रुपये का एक नोट है मान लीजिए, और आप चले एक दुकान में और बोले कि भैया ये 10 रुपये का नोट आप ले लो और मुझे 2 5 रुपये का नोट दे दो, तो आपके पास क्या हुआ? दो वैल्यू सेम ही हुआ ना. 10 रुपये तो 10 रुपये रहा, सिर्फ 2 कॉइन मिल गया आपको, आप 10 रुपये का नोट दे दिया. तो ये है रिफंजेबल, लाइक वी कैन एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ द मनी, राइट? So that is the basic difference between refundable and non-refundable. So what is non-refundable? The value that we can't exchange, right? So that is non-refundable. Like आप अगर मोनालिसा का पेंटिंग उठा लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसका जो वैल्यू है हम किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिक है, और सेकेंड ऑफ ऑल उसका जैसा और कुछ नहीं है, तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. अगर हम बोल देंगे कि मोनालिसा का पेंटिंग ले लो और 500 करोड़ दे दो, तो नहीं हो सकता ना. मोनालिसा का पेंटिंग तो मोनालिसा ही रहेगा, उसका वैल्यू तो नहीं चेंज होगा. तो इसे हम कहते हैं नॉन रिफंजेबल. सो NFT इज़ स्पेशली द थिंग विच इज़ नॉन रिफंजेबल टोकन. Like it is used as a token but we can't replace the value of that one. Like अगर हम कह लेते हैं एक विंटेज कार्ड, ठीक है, लाइक बहुत पुराना कार है, तो उसका हम लाइक अमीर लोग क्या करते हैं, ऑक्शन में चीज़ को बेचते हैं, तो हम उसको नॉन रिफंजेबल कहते हैं. सो NFT इज़ लाइक दैट थिंग ओनली, लाइक वी डू थिंग्स लाइक पुट आवर NFT in auction, people list and buy them. Like Amitabh Bachchan's NFT like also got sold like that only. Then our Twitter's co-founder, he also sold his first tweet NFT and got like huge amount of money, right? So that is basically NFT. Like we create our if we have our unique piece of things, like it can be anything, like a photo, a video, anything it can be. There is no such difference what is, but the thing is it is on a digitalized platform. That is the basic difference. Like Mona Lisa's painting is on our real hand, but these NFTs are on a digitalized platform on a blockchain technology. अब ये blockchain क्या बोल दिया, हमको तो blockchain ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता blockchain क्या होता है. हम हैं ना समझाने के लिए. तो let us understand what is blockchain. तो NFT क्लियर हो गया. So now let us try to understand what is blockchain and how these NFTs are digitalized and what is the blockchain technology used behind this NFT. Blockchain क्या होता है? Blockchain एक technology होता है, ठीक है. Now in this blockchain technology what happens is any transactions that happens, like अगर आप बैंक का एग्जांपल ले लो, जो हमारा जो ट्रांजैक्शंस होता है उसका एक रिकॉर्ड रहता है, वो सारा रिकॉर्ड बैंक के पास होता है, ठीक है. बट ये थिंग डिजिटलाइज्ड करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. लाइक द ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स are kept in a blockchain technology so that there is a very less risk in means losing our data, keeping our data safe, right? So that is a blockchain technology basically. Like अगर आप आपका दोस्त को से 500 रुपया सेंड करते हो, ठीक है, तो वो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन में रहेगा. और ब्लॉकचेन नाम क्यों है? लाइक आप अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो ये पब्लिक होता है, ये पहला तो चीज़ ये पब्लिक होता है, ठीक है, इसीलिए कोई इसमें चोरी नहीं कर सकता. लाइक नो वन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दैट ट्रांजैक्शन और द ट्रांजैक्शन दैट हैपेंड. सो दैट इज़ ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जानना है तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हो. सो हम इसमें इतना डेप्थ नहीं जाएंगे, हम NFT के बारे में जानने आए हैं. तो NFT बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, लाइक थिंग्स आर वर्किंग विद ब्लॉकचेन, राइट? सो दैट इज़ एन NFT, how things work. Now what is the properties of NFT? Like what is the basic properties that NFTs have? So NFT जो होता है वो यूनिक होता है, वो रेयर होता है, जिसका कोई कॉपी नहीं बना सकता,
ठीक है। NFT ऐसा चीज़ होता है जिसका कोई कॉपी नहीं हो सकता। नेक्स्ट थिंग इज़ ये चीज़ जो है नॉन डिविजिबल है। मतलब आप जब एक NFT को बेचोगे उसका आप उसको ऐसे नहीं बेच सकते कि हम आधा पार्ट इसको बेचा आधा पार्ट उसको बेचा, वैसा नहीं हो सकता। एक NFT आप एक ही टाइम सेल कर सकते हो, ठीक है। NFT एक ऐसा चीज़ होता है जो आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़, लाइक हाउ NFT, लाइक व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ NFTs। नेक्स्ट थिंग तो बोल दिया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता है जो कि पब्लिक होता है एंड ओपन होता है, राइट। नाउ अब द मेन पॉइंट में आता है जो मुझे लाइक बहुत टाइम लगा कि समझने में कि लोग इतना प्राइस देकर NFT को क्यों खरीद रहे हैं। लाइक वाई दे आर पेइंग सो मच मनी, लाइक 7 crores millions ऑफ मनी इज द पीपल आर पेइंग फॉर NFT। why it is happening, right? So you might be having the same question, so let me answer about this one. So पहले अगर आप जाते हो like बड़े लोगों के पास, like the people who are rich, like they buy some things like which are expensive, like paintings. It can be like vintage swords, anything that is like vintage or unique. They also buy the things previously in auctions, or you can say listed markets. In that they buy things which was very high priced, right? Normal people don't buy that one, but rich people buy that one and keep them in their home. But now चीज़ें क्या हुआ, डिजिटलाइज्ड हो गया, राइट। सो सब चीज़ डिजिटलाइज्ड होने लगा, वो सब पुराना चीज़ें अभी कोई नहीं खरीदता। अब नया चीज़ आया है NFT, लाइक सेम थिंग लाइक पुटिंग ऑक्शन, लाइक दिस इज बिकॉज ऑफ यूनिकनेस एंड ऑल दिस थिंग्स। लाइक ऑक्शन होने में प्राइस बढ़ा तो बस सब खरीद लिया, ऐसा ही मान लो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, लाइक NFT लोग पीपल इसलिए बाई करते हैं क्योंकि यूनिकनेस होता है। लाइक पहले बच्चा हॉट व्हील्स कार कलेक्ट करता था, अमीर लोग बड़े बड़े विंटेज कार और से पेंटिंग, लाइक जैसे लोग पेंटिंग खरीदते हैं सेम चीज़ डिजिटलाइज हो गया, लोग ऐसे ही खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वैसा ही फंडा है NFT का, लोग इसीलिए बाई कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जैसे प्रीवियसली वो इन हैंड बाई कर रहे थे, अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिजिटलाइजली बाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई एक बाई कर लिया तो वो उसके पास ही रहेगा, रीसेल कर सकता है अगर उसका मन चाहे तो, ठीक है। So that is why people are buying NFTs. So all the things are clear. Now let us come to understand how you can also make the NFT, which is the main point, right? So the video I would show you totally that how you can create, that will be coming in the next video part. So what your work is to do, subscribe my channel, hit the like button that if you have gained any knowledge from this video, मज़ा आया तो लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि ये वीडियो पहुंच जाए उन सभी लोगों के पास जिनको नहीं पता NFT क्या है। लाइक यूट्यूब एल्गोरिदम लाइक्स द हिट एंड कमेंट बटन्स। सो नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द NFT process, like how the NFT creating of NFT listing it works. Now to create your NFT, what means to list your NFT, what you have to do is you have to create your NFT and then you have to put it in the blockchain technology, right? And for that we have to pay our gas fees and all the stuffs, right? So but why we are going to pay that money, because we don't know that if we make our NFT and if it does not get sold, means if we can't sell it then we have to lose our money, right? But we want free things, right? Especially so I would show you in the next video part that how you can create your NFT and list it free of cost by a lazy minting technology. What is lazy minting technology? Lazy minting technology is a technology in which you can create your NFT and you can list it, and it will be listed not in the blockchain, but when someone will buy it, means someone will try to buy your NFT, then it will be, the gas fees will be paid by him itself as the whole amount of money, right? So if your NFT got sold, means if your NFT is being sold, then you will get money and gas fees also not required. But if your NFT doesn't get sold, no worry, we don't have to pay any money, it is free of cost, right? So to see the next video, click on the subscribe button, hit the bell notification, and I will meet you in the next video. Till then, bye bye, have a great day. And I think that you have gained a lot of knowledge from this video about NFT. Next video I would show you how you can create your own NFT easily and free of cost. So bye bye, have a great day.